So in this video I am going to share one of the important topic of direct taxation, that is revised return of income under section 139 subsection 5. This is a lecture number 8 and this topic already comes in June 2017 examinations. So without wasting any further time, let's get started. रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 जो कि इफेक्टिव हुआ फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 विथ फाइनेंस एक्ट 2016 ओके. if any person or you can say if any assessee having furnished a return of income under section 139 subsection 1, that is mandatory and voluntary returns within due date. 139 subsection 1 is mandatory and voluntary returns of income within due date. Okay. If any person having furnished a return of income under section 139 subsection 1, that is mandatory and voluntary returns of income within due date, or under section 139 subsection 4, that is deals with late filing of income tax returns, discovers any omission or wrong statement therein, then he may furnish a revised return of income at any time before the expiry of 1 year from the end of the relevant assessment year, or you can say before the completion of assessment, whichever is earlier. ओमिशन मीन्स लेस इनकम शो करना रिटर्न में, या फिर एक्सपेंडिचर कुछ एक्सेस दिखा दिया हो गई, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में कुछ एपर्सेबल हो गया होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट मीन्स रॉन्ग हेड, अगर पीजीबीपी का इनकम को आप कैपिटल गेन में शो कर दिया होगा, वो सब अगर डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट देयर इन, देन ही मे फर्निश ए रिवाइज रिटर्न of income at any time before the expiry of 1 year from the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment, whichever is earlier. But law up to assessment year 16-17 up to 16-17 law में क्या था, up to assessment year 2016-2017, that is फाइनेंशियल ईयर 15-16 में क्या हुआ था, द रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 मीन्स जो रिटर्न फाइल हुआ है लेटली, बिलेटेड रिटर्न, कुड नॉट हैव बीन रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5. जो बिलेटेड रिटर्न फाइल हुआ था आज फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16, वो रिवाइज नहीं हो पाता था आज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 as per law up to assessment year 2016 and 17 up to assessment year 2016-17, the return filed under section 139 subsection 4. Remember, section 139 subsection 4 means deals with late filing of tax return. Section 139 subsection 4 is late filing of income tax returns. मतलब अप टू असेसमेंट ईयर 16-17 में क्या हुआ था, जो रिटर्न फाइल हुआ था बिलेटेडली आफ्टर ड्यू डेट, that is under section 139 subsection 4, that could not be revised under section 139 subsection 5. But as per Finance Act 2016 with effect from assessment year 2017-18, क्या हुआ, द रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, जो बिलेटेड रिटर्न, जो रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट हुआ था,
that can be revised under section 139 subsection 5 with effect from assessment year 17-18. असेसमेंट ईयर 17-18 में क्या हुआ? द रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4. रिमेंबर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ऑलवेज डील्स विथ लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न हुआ था, दैट ऑल्सो कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 as per assessment year 17-18 with Finance Act 2016. Finance Act 2016. But before that, a belated return cannot be revised under section 139 subsection 5. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए. असेसमेंट ईयर 2016-17 तक क्या हुआ था? द रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 subsection 4, that is belated return, could not have been revised under section 139 subsection 5, but after Finance Act 2016, that is with effect from 17-18, 1 year के बाद, with effective from 17-18, that is financial year 16-17, the return filed under section 139 subsection 4, that is belated late filing of return, can be revised under section 139 subsection 5. ओके, क्लियर. देन इसमें नोट भी करना है. फर्स्ट, द रिवाइज्ड रिटर्न सब्स्टिट्यूट करता है ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल. द रिवाइज रिटर्न जो भी हुआ वो सब्स्टिट्यूट करेगा ओरिजिनल रिटर्न का. द रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल. And second condition, as assessee can revise a return any number of times. An assessee can revise a return of income any number of times, provided that the revised return of income is filed within the time prescribed under section 139 subsection 5. As assessee can revise a return any number of times, provided that the revised return is filed within the time prescribed under section 139 subsection 5. So this is it all about revised return under section 139 subsection 5, जो कि effective हुआ from assessment year 17-18. Assessment year 17-18, Finance Act 2016. Finance Act 2016. And remember that section 139 subsection 1 belongs to mandatory and voluntary returns of income within due date. Section 139 subsection 1 belongs to mandatory and voluntary returns of income within due date. Section 139 subsection 1 belongs to mandatory and voluntary returns of income within due date. And section 139 subsection 4 deals with late filing of income tax return. Remember, section 139 subsection 4 deals with late filing of income tax return, and 139 subsection 5 belongs to revised return of income. Okay, so ये सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा. सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बिलोंग्स टू मैंडेटरी एंड वॉलंटरी रिटर्न्स ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट, एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 deals with late filing of income tax return, and section 139 subsection 5 deals with revised return of income. Revised return of income. Revised return of income. Revised return of income. सो इसमें क्या हुआ, जो लॉ था अप टू असेसमेंट ईयर 16-17, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(4) could not have been revised under section 139 subsection 5, but after Finance Act 2016, that is with assessment year 17-18, the return filed under section 139 subsection 4 can be
revised under section 139 subsection 5, that is revised return of income। एंड इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, द रिवाइज रिटर्न जो भी होगा वो सब्सिट्यूट करेगा ओरिजिनल रिटर्न। द रिवाइज रिटर्न सब्सिट्यूट्स द ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड। एंड an assessee, second condition, an assessee can revise a return any number of times provided that the revised return is filed within the time prescribed under section 139 subsection 5, that is called revised return of income। Okay, so this is it, all about revised return of income under section 139 subsection 5। So I have shared all about all such things very well. So thank you so much for your time, and thank you so much for your support, and happy studying।